Good morning, students. Today, hi, in Payal Commerce, we are starting that is FYBCOM's SEM 2 Module 3 Logistics Network. This is the last topic that I am doing for this module. पहले समझते हैं डेफिनेशन से ये फिलिप कॉटलर ने लॉजिस्टिक नेटवर्क के बारे में क्या कहा है। फिलिप कॉटलर ने ये बताया है कि लॉजिस्टिक नेटवर्क मतलब प्लानिंग, implementing and controlling the physical flow of material and finished goods from point of origin to point of use to meet the customer's need at a profit. मतलब once again, planning, implementing and controlling the physical flow of material and finished good from point of origin to the point of use. मतलब point of origin in बैंगलोर भी हो सकता है और customer needs मुंबई भी हो सकता है. Do you understand? Because there are lots of places in the interiors of a lot of places जहाँ पे factories बहुत सस्ते में मतलब land वगैरह मिल सकता है and everything. तो लॉजिस्टिक्स इसके बारे में नहीं कि जहाँ पे फैक्ट्री है वहां पे ही मुझे ही करना है. मैं किस तरीके से मुझे जैसा कन्वीनियंट पड़े और चीप पड़े मैं वो गुड को प्रोड्यूस करूंगी और उसको मैं दूसरी जगह पे प्रॉफिट में बेच सकती हूँ. सो इसके लिए ये पूरा लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट है. लॉजिस्टिक्स एक नेटवर्क बेस्ड अप्रोच है. व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क? नेटवर्क मतलब flow of materials from a supplier to a manufacturing plant and finally the finished product to the end user. उसमें अभी नेटवर्क में क्या आएगा? गुड कोऑर्डिनेशन आएगा, एक्टिविटीज है, टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज कितने रहेंगे कितने नहीं रहेंगे, ये सब ये लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में आएंगे. ओके, देयर कुड बी अनदर थिंग. देन मुझे ना खाली वो एक महीने के लिए रेंट पे किसी का गोडाउन चाहिए तो वो भी हो सकता है. मतलब इट इज लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स अवेलेबल. मैंने प्रोडक्शन कर दिया अंटिल माय नेक्स्ट लॉट इज गोइंग टू गेट डिस्पैच. मैंने ना एक जगह पे रख दिया है फॉर अ मंथ. तो ये सब एलिमेंट आता है लॉजिस्टिक्स में. दिस इज वन एग्जाम्पल. अभी देखते हैं एक एक एलिमेंट मतलब लॉजिस्टिक में कौन से एंगल में देखेंगे कि कैसा वो लॉजिस्टिक्स काम में आ सकता है. तो पहला है फैसिलिटी लोकेशन एंड नेटवर्क डिजाइनिंग. तो ये क्या है? यहाँ पे द लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट मस्ट डिजाइन द लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज फ्रॉम वेयर द लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस वुड बी कैरीड आउट एंड देयर इंटरकनेक्शन. मतलब कहाँ से ये चालू होएगा, कहाँ से ये इंटरकनेक्शन होएगा, वो सब एक प्लान आउट. मतलब यू कैन जस्ट ड्रॉ और राइट इट. लाइक मटेरियल हैंडलिंग कहाँ पे होएगा, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पे होएगा, वेयर हाउसेस कहाँ पे होएगा, होलसेल एंड रिटेल आउटलेट्स कहाँ पे होएगा. These aspects of logistics would affect other aspects like level of inventory, transportation, packaging, delivery. For example, you will see, ये सब जो higher end के milk bottles रहते हैं ना, वो glass में ही रहेंगे, like energy bottles, or they have that glass come plastic, the new ones that they have found. But the thing is, once they open, you have to consume it. If you've ever seen Sarda Farms karke uska milk, they always come in those glass big bottles and very nicely packed. So this is one element, one example of how logistics is. Okay. Second element है information. Information मतलब क्या? जो logistics है वो एक essentially an information based activity है. Because there is a movement from across a supply chain. अभी फॉर एग्जाम्पल ICT है, मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये अपन ने लास्ट सेमेस्टर में भी किया था. तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन है, एक्सेस है, स्टोरेज है, एनालिसिस है, रिट्रीवल है और डिसीजन. नाउ आई गिव यू एन एग्जांपल. ज़ारा, everybody knows Zara brand या Westside brand. अभी मैंने ना 500 एक शर्ट्स ऑल अक्रॉस मुंबई के लिए प्रोडक्शन किया था एक स्टाइल का, या मे बी 5000 ऑल अक्रॉस इंडिया. अभी मेरा इंफॉर्मेशन मतलब ये ICT टूल से मुझे पता चलेगा कि कितने अभी बाकी है. बिकॉज मुझे नेक्स्ट प्रोडक्शन आई विल बी डूइंग इज बैच वाइज प्रोडक्शन. बैच वाइज मतलब जैसे मुझे चाहिए. तो मैंने क्लिक ऑफ अ बटन पे देखा कि अभी भी पूरे इंडिया में 2000 स्टॉक में स्टिल है. अभी जब तक मैं सेल में ये सब डिस्कार्ड नहीं करूंगी तब तक मैं न्यू अराइवल्स उसका तो नहीं रखूंगी.
अभी मैं दूसरे पैटर्न्स का न्यू अराइवल रखूंगी, जो मेरा डेड स्टॉक है वो पहला मैं क्लियर करूंगी, और जो नए नए मुझे दिखाने के लिए थोड़ा करना है उसका मैं बैच प्रोडक्शन करके नया सैम्पलिंग में डाल दूंगी। तो ये सब मुझे कैसे पता चलता है, वो टूल से कि कितना मेरे पास इन्वेंट्री में है। उसके बाद द थर्ड पॉइंट आई हैव इज कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग। The purchase order placed by the buyer contains details on quality and quantity of product's price, like location of delivery कहाँ है, delivery schedule कहाँ है, product का specification क्या है, credit period अगर है तो कितने टाइम का है, अगर I can return है तो कितने दिन में मुझे return करना है. So all of that is customer order processing. Are you understanding? उसके बाद I have is inventory management. ये बहुत important है. मतलब जो भी कंपनी है उसको बहुत सारा स्टॉक या बहुत कम स्टॉक भी नहीं रखना है, बिकॉज वो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड इफ टू लो इन्वेस्टमेंट्स दे मेंटेन, इट में अफेक्ट द डिलीवरी शेड्यूल्स. सो इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. उसके बाद आई हैव इज वेयर हाउसिंग. सो वेयर हाउसिंग इट रिफर्स टू स्टोरेज of finished goods until they are delivered to the market. Warehousing is an important element in logistics. मतलब अभी फॉर एग्जाम्पल मुझे वो 1 महीने के लिए मेरे गुड्स कहाँ पे रखने पड़े, तो किसी का जो गोडाउन है वो, या अ लिटिल बेटर देन अ गोडाउन, सो दैट वुड बी लाइक अ वेयर हाउस. सो वो डिजाइन कैसा है, वो मेरे गुड्स के लिए काम लगेगा कि नहीं लगेगा, साइज कितना है, मेरे गुड्स कितने हैं और वो वेयर हाउस का साइज कितना है, लोकेशन कहाँ पे है, ओनरशिप ऑफ वेयर हाउस है, कंपनी ओन्ड है, हायर्ड है, क्या है, वो पूरा मुझे स्टेटस स्टडी करना पड़ेगा. इनिशियली ना कोई भी काम सेटअप करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, यू हैव टू गिव इन पेशेंस, यू नो. देन आई हैव इज ट्रांसपोर्टेशन. अभी वो चीज वेयर हाउस से सब शॉप्स या ई कॉमर्स साइट के जहां पे भी मुझे डिलीवरी करना है, सपोज 5 ऑर्डर साउथ बॉम्बे के हैं, 15-20 ऑर्डर दादर के है, कोई ऑर्डर दिल्ली के है, तो वो कैसे, वो लॉजिस्टिक्स कैसे, उसमें ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या आएगा, अर्जेंसी ऑफ प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स क्या आएंगे, नेचर ऑफ गुड्स क्या आएगा, लोकेशन ऑफ द कस्टमर कैसे होएगा, वो सब ट्रांसपोर्टेशन में आता है. 6 पॉइंट. तो अभी तक हमने क्या एलिमेंट्स, लॉजिस्टिक्स में 6 एलिमेंट्स जो हमने किए हैं. पहला है फैसिलिटी, लोकेशन एंड नेटवर्क डिजाइन. सेकेंड वन इज इंफॉर्मेशन. थर्ड वन इज कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग. फोर्थ वन इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट. फिफ्थ वन इज वेयर हाउसिंग. सिक्स्थ वन इज ट्रांसपोर्टेशन. सेवेंथ वन आई हैव इज मटीरियल हैंडलिंग. तो द स्पीड ऑफ द इन्वेंट्री, मतलब अभी जो इन्वेंट्री है, मूवमेंट अक्रॉस द सप्लाई. अभी कोई लोग है, टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, सोप्स है, उसका दिन में फटाफट 2-3 हजार 4-5 हजार का बिक्री होता है. क्लोथ्स है, दे विल नॉट बी एज फास्ट मूविंग, बट जैसे बोलते हैं कि 200 से 500 के टॉप्स है, वो फटाफट से बिक्री होता है. डू यू अंडरस्टैंड? जो थोड़े पार्टी वेयर टॉप्स है, that will not be that fast. So improper method of material handling and incidental overheads, considerations for selections of material handling, so they all are movement level of services to be offered to the customer. All of that comes under material handling. उसके बाद I have is logistical packaging. अभी पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग क्या है, डिजाइन कैसा है, क्या अट्रैक्टिव है, फिर यू विल सी मार्किंग एंड लेबलिंग कि इसमें ये इंग्रेडिएंट्स है, ये ऐसा है. इफ इट्स एन ISO मार्क, देन दैट इज द मार्किंग दैट इज डन. अगर बासमती है तो दैट दे विल हैव अ बासमती राइस, बिकॉज वो उसके मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट. ओके. उसके बाद कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स, the quality of service which a firm provides to the customers. So the company's management sets quantitative guidelines for the customer service. For example, Domino's Pizza has set a standard for delivery within 30 minutes. You will see, बेचारे, there are so many दो delivery वाले लोग जो ऐसे भाग भाग के जाते हैं because they want to reach in that 30 minutes time.
sometimes they are actually nearly they would have been dead. इतने वो fast चलाते हैं, but they cannot do because otherwise उनको उनके pocket से भरना पड़ेगा. So the money, because the customer will be unhappy. The customer being unhappy is something that the service industry cannot be, because a customer also they cannot lose. So all these are the elements. Now we are studying what is the importance of logistics. तो logistics इतना planning क्यों लोग करते हैं, क्यों इतना ये important है, मतलब let's understand. लॉजिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करता है, सप्लायर्स का इमेज बढ़ता है और स्टेक होल्डर्स का एक वट पड़ता है. इसके लिए लॉजिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. लॉजिस्टिक्स में टाइमिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो लेट्स अंडरस्टैंड each and every feature. The first feature I have is delivery on time. So logistics facilitate the delivery of goods to the customers on time. For instance, the inventory management facilitates prompt execution of orders. So there is no doubt that better delivery schedule is a good promotional strategy when buyers are reluctant to invest in warehousing and keeping higher level of inventory. So all of that is delivery on time. उसके बाद the second thing I have is customer satisfaction. It creates time and place utilities in the products and thereby helps in minimizing the value satisfaction to consumers. So all of that comes under customer satisfaction. Third point I have is marketing objectives. When I'm talking about marketing objectives, I have is increase in sales, increase in the market share, increase in profits. All of that comes under is the marketing objectives. उसके बाद I have the fourth one, that is protection to goods. Now when I'm talking about protection to goods, I'm keeping in mind that में जो warehousing होएगा या suppose it's a rainy season, you will always see के umbrellas till the end of May वो बन ही गए होंगे जो next season के लिए, मतलब जो जून से बिकेंगे सब shops में. So logistics facilitate protection to goods from damage due to efficient warehousing and transportation. So that is known as protection to goods. Fifth one I have is expansion of business. Logistics facilitates expansion of business from local level to regional level to national level and international level. So the expansion, is very, very vast. So many people, they have made big buildings, मतलब इतना fortune बनाया है all because of logistics, So many people, ये जो छोटे छोटे जो है रोज के, you will see these taxi drivers also, वो सब shops का सब सामान लाते हैं. That is a very simple level logistics. कि जहाँ से wholesalers है वहाँ से ये retailers है, वो अपना पूरा दिन का या 2 या 3 दिन का पूरा स्टॉक भरते हैं. So this is one very small example of logistics. उसके बाद is employment, very, very wide. Millions of people are employed here. Material handling, warehousing, manufacturer sector. Indirectly, it generates employment in the supporting sector such as banking, insurance, telecom, and so on. So all of that comes under, employment. उसके बाद I have is economic growth. So logistics facilitates the economic growth of nations. Due to logistics, the manufacturing sector gets a boost. So this is the GDP of the nation is going to get increase. The eighth one I have is standard of living. The logistics sectors helps to improve the standard of living. Very important, because कोई लोग 10,000, उसके बाद 15,000, उसके बाद 20,000, and logistics is one thing which will never stop. Why? Because people will always require the delivery of goods. So one always requires people, they require more drivers, they require trustworthy people. So due to employment, अगर लोग employed है तो purchasing power उनका increase होएगा, उनके लिए से उनका consumption increase होएगा. They will be able to buy better types of goods and service, और उसकी बदौलत the standard of living will increase. So this was the 8th point that I explained. The 9th point I have is facilitates international trade.
So logistics is vital for international trade. It facilitates the movement of goods between countries. Therefore, countries can focus on the production of those products in which they enjoy greater competitive advantage. You will see French wines are the best in the world. Switzerland chocolates are the best in the world. People crave from all across the world for those kind of things. This is only because of logistics that the trade can take in place and the delivery of goods can take from one country to another country. Plus, it is way more cheaper because what they will be able to make, you cannot make that same make. वो same make बहुत important है for a lot of people, even if they want substitute products. And the 10th point I have is revenue to the government. The logistics department, they generate a lot of revenue to the government by way of direct and indirect taxes. So plus octroi hai, VAT hai, some now jo GST hai. So that is like, in fact, because of GST, the tax revenue that the government collects has also increased. So overall, it's a very nice thing, and logistics is indeed a very booming business. Now we see the challenges. Students, the sixth and the seventh point, I have taken it from another book because I was not too happy with the normal Manan Prakashan. But I will explain you. So in the recorded video, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ about this. So challenges for logistics, and you can of course write in your own words too, about this. So ये challenges क्या है? ये challenges का meaning ही ये है that people are facing some issues. Are you understanding? So let us understand. First, I'm finishing with the first 5. The infrastructure bottlenecks. ये bottlenecks का मतलब ये है challenges. मतलब क्या hurdles आती है, अभी लोग अभी पहली बार आप जब रेस में दौड़ रहे हो तो आपको इनिशियली आपके पैर दुखेंगे, फिर आपको अपना बॉडी को ट्रेन करना पड़ेगा. सिमिलरली लॉजिस्टिक्स के लिए पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स, मतलब रोड्स, कंडीशंस, ये बहुत बड़ा चैलेंज है. पुअर कनेक्टिविटी, inadequate air and seaport capacities, सब ट्रांसपोर्ट्स नहीं है, lot of drivers they are drinking at night, so infrastructure bottleneck per transaction, and sometimes it is way more costly for smaller orders. तो वो भी बहुत important एक नजरिया which lot of people in the service industry they are facing. Second one I have is poor infrastructure. So poor infrastructure यहाँ पे is the way it is designed. Are you understanding? मतलब smooth functioning, then the roads are either very narrow, और जो highways के है वहां पे roads बहुत uneven surface पे है. 40% of the villages they do not have all weather roads. एक्चुअली ये दोनों पॉइंट्स बहुत सेम है, लेकिन मेरे पास पॉइंट्स कम थे एंड आई वाज ट्राइंग अ लॉट, बट आई रियलाइज कि कुछ और नहीं मुझे मिल रहा था, या जो मिल रहा था वो थोड़ा डिफिकल्ट था फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड. इसके लिए मैंने ये 2 अलग पॉइंट्स में बाइफर्केट किया है. But what you can do is you can write this point and write this point at the 7th point. So that is how your points will also increase and it will look nice. उसके बाद रोड जो कंडीशंस है वो बहुत पथेटिक है. मेन थिंग इज वेयर हाउस से जहां पे डिलीवरी है वो रोड बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है. सो उसके लिए डिले हो रहा है, बिकॉज समटाइम्स योर फैक्ट्रीज आर इन गुजरात और सिलवासा and the delivery would be in Mumbai, or they would be in Delhi, or they would be in Agra, they would be wherever, because वो factory वहां पे there are lots of क्या बोलते हैं schemes of the government जिसके वजह से factories वहां पे set up हुआ है. उसके बाद पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर. पोर्ट मतलब क्या? जहां पे वो सी है वहां पे पोर्ट होता है, जहां पे लोडिंग और अनलोडिंग, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर ट्रैवल्ड बाय द सी. So this is insufficient to handle the flow inefficiently. Shanghai ports can be turned around a container ship in 8 hours. The same ship in Mumbai takes 3 days. So air cargo handling facilities at many metros and towns are negligible to be non-existent. So new port and a large container are on the cards. So this is known as
the port infrastructure, लार्ज कार्गो की जरूरत है. कार्गो मतलब वेसल्स, जहाँ पे जो लार्ज शिप्स, जहाँ पे बहुत सारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो सकता है. उसके बाद there is also challenges before the government. Are you understanding? So what are the challenges before the government that I have? That the government has to face a lot of things sometimes. Okay, sometimes they're not able to meet with the deal with companies, or they are not able to relate, और उनके laws जो है they are not encouraging, मतलब encouraging for whom? The people. Are you understanding? So that is one major loophole that people are having. So before the government, it is the interplay of technology, infrastructure, and new services. Taxation policies थोड़ा ease out करना पड़ेगा. They have to even develop this. One more the thing that you can even write about, which I have not mentioned, is delays and spoilage. So delays, the western parts, especially when the cargo is happening, there could be delay for the steam. उसके बाद there is interstate check post also. कभी कभी क्या होता है, कोई लोग क्या करते हैं, some other goods भी मिला देते हैं इसमें, and if they are caught which is actually banned, it could be example, so that is also check post, and that entire good would be seized. Are you understanding? उसके बाद I have is problem of unorganized sector too. तो इसमें क्या होता है, these are not mentioned here, but they are also one of the points. So due to the unorganized sector matlab, this you chit funds, money lenders and all, there are a lot of these things that there is poor handling, delay in delivery, chalta hai, hota hai. Those paperwork and documentation work doesn't happen. There are many people, who would probably do things not official. That is why they come in the unorganized sector. उसके बाद I have is challenges at the firm level. When I'm talking about the firm level, what do I mean? So firm level that I have is at every company's point of view. So it restricted to large size firms. Large size firms वो अपना काम बहुत बड़े level पे कर रहे हैं. Are you understanding? Reduce cost, order processing, delivery status of that areas. Are you understanding? The IT technology is utilized. It is possible to record improved efficiency in administration, and only a few thousand vehicles have tracking systems. IT firms could provide, so Reliance Connect at their petrol pumps, to call their employees. So this service is of a very important role. Then I have is challenges in outsourcing. So outsourcing मतलब अगर मैंने किसी और का बोला, फॉर एग्जाम्पल मेरा ABC कंपनी लिमिटेड है और मैंने XYZ कंपनी को ट्रांसपोर्टेशन के लिए एम्प्लॉय किया है. So outsourcing is widely used because you cannot reach. Freight forwarding हो सकता है, distribution network planning हो सकता है. उसके some people don't want to do double taxation, multiple warehousing. So companies use outsourcing for several reasons. Students, I hope this topic has become very easy. The examples I've taken from internet, the content I've taken from Manan Prakashan as well as Vipul Prakashan. Students, I hope this entire topic has become very easy. Thank you, students, for the same.